Now, again, welcome back. Today we are again discussing about the profit and loss appropriation account. Now, P&L appropriation account will be start from here and we will write here by net profit. This one. Then there will be a by interest on drawing. This one. Then to interest on capital. Dash and to salary of the partner. This one. Then to commission to the partner. Then manager commission. Then to divisible profit, or we can say that by divisible loss. Now, this is the closing and this is the closing. Dash and dash. Now, this net profit is transferred from profit and loss account, profit and loss account. Transfer from profit and loss account. This profit. Then coming to the interest on capital, this was calculated by the capital invested in the business. That's all. No? Formula used will be PRT upon 100. This one. Now salary of the partner. This one. Salary of the partner will be monthly mode or quarterly mode or half yearly mode. This one. Then commission will be calculated on turnover or sales during the year. This one. Manager commission will be calculated from either from net profit, either from divisible profit. These things. Then coming to the interest on drawing, this one will be monthly mode, quarterly mode, half yearly mode, or 9-month mode. This one. Then this is the structure of profit and loss appropriation account. Now coming to the profit and loss, or we can say divisible profit or divisible loss. These both things will be distributed
distributed. That's why it's known as divisible profit. Divisible profit or divisible loss. Distributed in profit sharing ratio. Sharing ratio according to B. This one. Yes or no? This is the structure for profit and loss appropriation account. Now again, net profit will be transferred from profit and loss account. Then, moving to the interest on drawing, this will be calculated either from monthly mode, quarterly mode, half-yearly mode, or 9-month mode. Then coming to the interest on capital, calculated by the capital invested in the business. Then salary of the partner, monthly mode, quarterly mode, half-yearly mode. Commission to the partner, which was turnover or sales during the year. Then manager commission calculated from net profit or divisible profit. Then divisible profit or divisible loss distributed, the divisible profit or divisible loss distributed in profit sharing ratio according to the D. This is the format of total profit and loss appropriation account. Now, if we move to the guarantee portion, guarantee will be either given in net profit or in divisible profit. Guarantee will be given in these things. To the partner. Guarantee always given to the partner. This is the guarantee. Now, this is the portion for guarantee. Now, these 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, or we can exclude the manager commission. These three things, 1, 2, and 3, these three things will become in the omitted portion. Omitted, to be recorded. Omitted to be recorded. These three things, interest on capital, IOC, interest on capital, salary or commission. For the expense side, this is your expense side. Then coming to the interest on drawing, this is also omitted. To record it. For income side, yes or no? Now the total conclusion of this total profit and loss appropriation account is that again we will start from net profit which was transferred from profit and loss account. Then interest on drawing, there are 4 cases: monthly mode, quarterly mode, half-yearly mode, 9-month mode. Then moving to the expense side, interest on capital, which was on the basis of capital invested in the business. Then salary to the partner, which was monthly mode, quarterly mode, half-yearly mode. Commission to the partner, which was turnover, sales and during the year. Turnover और sales के हिसाब से होती है. Then manager commission, which was always being calculated through calculation from net profit or divisible profit. Then coming to the divisible profit or divisible loss, this was always distributed in profit sharing ratio. This one. Then coming to the guarantee portion, guarantee always been given in divisible profit or net profit. This was given to the always to the partner. इस partner को दी जाती है. Then moving to the omitted. These are the expense for the company. These three things: interest on capital, salary to the partner, and commission to the partner. These are the expense
for the company. That's why this will be considered omitted to be recorded. This is the expense. These three things are expense for the company. Interest on capital, salary and commission. Manager commission always be this one. Manager commission. This one. The manager commission. This one. The manager commission. This is the expense for the company but not for the partner. Expense for the company but not for the partner. Expense for the company या for the firm but not for the partner. पार्टनर के लिए क्या है? इनकम, लेकिन ये कंसीडर नहीं की जाती है. दैट्स व्हाई. तो पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर है. तो बहुत ध्यान से देखिए. पहले नेट प्रॉफिट है जो आपका ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आप कैलकुलेट करते हो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और 9 मंथ कोड पे, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस में आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ PRT अपॉन 100. ये है सैलरी ऑफ द पार्टनर जो मंथली होती है, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है. कमीशन जो टर्नओवर या सेल्स के हिसाब से होता है. मैनेजर कमीशन जो हमेशा कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में. अब आते हैं डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस. ये दो चीजें होंगी जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से. अब ओमिटेड और गारंटी में आते हैं तो पहले गारंटी की तरफ को चलते हैं. तो गारंटी ऑलवेज बी गिवन टू द पार्टनर इन नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट. इन दोनों में निकलती है गारंटी विल बी गिवन इन दीस थिंग्स टू द पार्टनर. सिर्फ किसमें दी जाती है? नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में. आप एक्सपेंस और इनकम में कभी भी गारंटी नहीं दे सकते. अब आते हैं आप ओमिटेड में. ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड का मतलब ये होता है जो एक्सपेंस है कंपनी का उनको रिकॉर्ड करना भूल गए. तो ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड में क्या आते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन. देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन. अब उसके बाद इनकम साइड में आते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी आप ओमिटेड में जोड़ते हो लेकिन कंपनी के लिए इनकम है. तो इतना समझिए आपके फर्स्ट चैप्टर का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने पिछले की 3 वीडियो में भी आपको बताया था, 3 या 4 वीडियो में. और इसका ब्रीफ ये है और आपने इसी हिसाब से अगर कोई न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं देन कम टू माय ऑनलाइन चैनल. ऑनलाइन चैनल में आपको ऑनलाइन लिंक मेरा नंबर है 7310628558. अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप इसमें मुझे लिंक करिए. और ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, ड्यू डेट मैं आपको बता दूंगा. उसी के साथ आप यहाँ ज्वाइन करिए. मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा. यस और नो. ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है फर्स्ट चैप्टर का. और अगली वीडियो में मैं आपको गुडविल के बारे में बताऊंगा. देन ओके, देन माय स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.